morning students. Today we are going to start a very new chapter of writing section, that is notice writing. Today we are going to study about notice writing. First let us know what is a notice. A notice is a piece of written information or a written piece of information for a group of people. It is pasted or pinned at one place, that is a notice board. So what is a notice? नोटिस एक लिखित इंफॉर्मेशन है, सूचना है, ठीक है, जो कि एक नोटिस बोर्ड पे या किसी एक जगह पे पेस्ट कर दिया जाता है. आई होप इट इज क्लियर. एंड अ स्टूडेंट इज ऑफन कंफ्यूज्ड बिटवीन टू थिंग्स, दैट इज अ नोटिस एंड अ सर्कुलर. बच्चे अक्सर नोटिस और सर्कुलर में कंफ्यूज हो जाते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नोटिस एंड व्हाट इज अ सर्कुलर. नोटिस एंड सर्कुलर बोथ आर अ पीस ऑफ रिटन इंफॉर्मेशन. नोटिस और सर्कुलर दोनों ही लिखित सूचना देता है हमें, बट व्हाट इज द डिफरेंस? फर्क क्या है? नोटिस इज पेस्टेड एट वन प्लेस, नोटिस को एक जगह पे रखा जाता है या लगाया जाता है. एंड सर्कुलर इज गिवन और सर्कुलेटेड टू everyone of the target group. That means notice is pasted at one place, maybe notice board, but circular is given to everyone. Just suppose you want to inform the students about holiday or summer vacation. So there are two ways of information or providing information. First is notice and second is circular. If you want to inform students about summer vacation through a notice, you have to paste the notice in the on the notice board. But if you want to inform through a circular, what you need to do is you need to provide the circular or written information to every student. सभी बच्चे को सर्कुलेट किया जाता है, सभी बच्चे को सर्कुलर दिया जाता है. बट नोटिस का क्या है? वो एक जगह पेस्ट कर दिया जाता है, लोग वहां जाके नोटिस को पढ़ते हैं. I hope it is clear. Now we will see the format of notice. And all of you must write in your notebook that what is a notice. A notice is a written form of information pasted on a notice board. After this we will study the format of a notice. So first thing what we have to do is we have to enclose our notice in a box. नोटिस का सबसे पहला रूल है कि आपका जो नोटिस है वो एक बॉक्स में एनक्लोज होना चाहिए, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स. Okay, this is the first and foremost rule for writing notice. And after making a box, what you have to do is you have to write the name of institution which is issuing the notice. Name of the institution. Just after this, you have to leave some space, and then write the word notice in capital letters. Okay students, I hope it is clear. First we are writing the name of the institution or agency which is issuing this notice. Just after this, leave some space and write the word notice in bold letters, that is capital letters. You can also say block letters. Okay, it will be better if you underline it. It is not the hard and fast rule, बहुत ही restricted rule नहीं है, but still you can underline it to just give a focus on this word that it is a notice. It should be written in capital letters. You can write it in a catchy way or bold works. So this is your notice. Just after this, it is optional that you have to leave space or not. Leave some space and give date at the left corner. Okay, give date. Then again you are required to leave some space and write the topic here. Just suppose the topic of writing a notice is singing competition. That means you have to give the topic. This is the topic of writing a notice. Just suppose you are informing the students about singing competition. So give the heading that what is the means aim of writing the notice. Notice क्यों लिख रहे हो? You are informing about singing competition. Just after this, you can leave one line or leave some space
and start your notice, that is the body of the notice. Body of the notice. This body of the notice must have all the relevant details, that is the important details like date, time, venue. That means when the function is going to take place, where it is going to take place, what will be the duration of that function, who are the chief guests, all those things. If there is any entry fee, you can also mention it, but keep in mind you have to provide only the important informations here. You can also write in paragraphs. Then after that, after completing the body of the notice, just come at the bottom, leaves some space, write your name and designation here. Write your name here, leave some space, write your name, then after this your designation. What will be your designation? As a student, it is written in the question. It can be कैप्टन, वाइस कैप्टन, सेक्रेटरी, स्कूल लीडर. आप एक स्टूडेंट के तौर पे जब आप नोटिस लिख रहे हो तो आपको क्वेश्चन में ही बता दिया जाएगा कि आप कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो, सेक्रेटरी हो. देयर शुड बी सम डेजिग्नेशन. ओके, योर नेम देन डेजिग्नेशन. दिस इज द एंड ऑफ द नोटिस. रिमेंबर वन थिंग, द वर्ड लिमिट फॉर नोटिस इज 50 वर्ड्स. हर एक राइटिंग सेक्शन में हर एक सेक्शन का एक वर्ड लिमिट है and the word limit for notice is 50 words. आपको approximately 50 words का नोटिस लिखना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए. So let's repeat once more. The hard and fast rule for notice is you have to enclose it. इसको चारों तरफ से कवर करना है, नहीं तो कितना भी अच्छा नोटिस लिखो, you are going to lose your marks. आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. So this is the hard and fast rule. You have to cover the notice. Depend करता है आप नोटिस को पहले कवर करो या बाद में. Okay, so this is the format of notice. We will also see some samples. हम कुछ samples भी देखेंगे. One more thing you have to keep in mind that what else things you don't have to do. क्या-क्या नहीं करना है notice में. First thing, you don't need to use personal pronouns. इसके ये body जो है notice का, इसमें हम personal pronouns use नहीं करेंगे. We will not use personal pronouns like I, we, you. इस तरह के शब्द नहीं use करेंगे. For example, अगर हमें singing competition के बारे में बताना है, we will directly write all the students are hereby informed that the school or a singing competition is being organized by the school. ऐसे करके लिखेंगे. You, I ये सब use नहीं करेंगे notice में. This is the hard and fast rule. You don't need to use personal pronoun. Try to write in passive voice. So this is the rule. After this, let's focus on some rules which you need to write. आपको लिखना है कॉपी में. नोटिस का definition तो आपने लिख लिया. You have written the definition of notice. Just put there a topic, rules. रूल्स करके हम लिखेंगे. फर्स्ट रूल, अ नोटिस मस्ट बी एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स. नोटिस जो है एक बॉक्स में एनक्लोज होना चाहिए. सेकंड रूल इज वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स और वर्ड लिमिट शुड नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स. टू रूल्स आर ओवर. थर्ड वन इज ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन. बस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही दिया जाना चाहिए. ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन इन द नोटिस. फोर्थ रूल इज A notice should not give irrelevant information. जो जरूरी नहीं हो वो information इसमें नहीं जाएगा. Notice should not give irrelevant information. After this, always use, next rule is always use fresh page for writing a notice. हमेशा notice लिखने के लिए हम fresh page use करेंगे. इसका मतलब क्या है? It happens mostly in exams that when a student is writing or solving the questions, when he comes to attempt the notice, what he does is he attempts the notice on the same page and ends to write the next part in the next page. क्या करता है बच्चा? नोटिस जब स्टार्ट करता है एक पेज में नहीं आता है तो नोटिस का आधा पार्ट वो नेक्स्ट पेज में कर देता है. You will lose your marks. आपको करना क्या है? एक फ्रेश पेज में आप जहाँ पे स्पेस बचा है उसको क्रॉस कर दीजिए. नोटिस को एक फ्रेश पेज में, एक नए पेज में अटेम्प्ट करेंगे. अदरवाइज इट विल नॉट बी चेक्ड और इट विल बी कैंसल्ड. आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट रूल इज personal pronouns should not be used in notice like I, you, we. Next rule after this is a notice should be written in passive voice. I hope you have understood this. As I told you, this is the end of the notice. Okay students, after this we will practice some samples also. I hope it is clear. Name of the institution can be anything. जो भी institution का नाम आपके क्वेश्चन में दिया हो, ABC Public School, Happy Valley School, any school. अपने स्कूल का नाम मेंशन नहीं करना है. जो उस क्वेश्चन में दिया है यू विल राइट दैट नेम. ओके, नोटिस जो टॉपिक हो वो लिखेंगे. सिंगिंग कॉम्पिटिशन वॉट एवर इट इज, गिव द रेलेवेंट डेट. दिस इज द एंड ऑफ द नोटिस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू स्टूडेंट्स.